Good evening, friends. Today we are going to learn 8 different shortcuts. Then we are touching formulas. So, what are the things are very important for creating any formula, and what are the difficulties we face? How to handle those difficulties and how to make formula work for you. Okay. So this is today's topic, and then in formula also we are using something like names, defined names. So we will go through that. So let us go to the training material. So first shortcut, Control D to fill down. In yesterday's training, we observed that video is not required. I will just put it down. Okay. So Control D is fill down. For example, I have written this down here, and I want this cell below. So what we can do, we can select the below cell, and if I want to fill it down only for one cell, we can say, press Control D, so it will fill down. But if you want many cells, then you have to select this cell as well, and then select this entire selection, and then Control D, so it will fill down. Suppose I want to fill it right, same thing, select the cells along with the original cell. Shortcut is Control R, so we can fill it right. Then Control F to find something. For example, I have given the task, find the word New York in this workbook. So what is workbook? So these are sheets, shortcuts, relative, absolute, these are sheets, and all these sheets are comprising in one वर्कबुक. तो सारे सीट मिला के वो होता है वर्कबुक. हम बोलते हैं एक्सेल फाइल, तो इससे आगे हम एक्सेल को एक्सेल फाइल नहीं बोलना है, उसको बोलना है वर्कबुक. ओके. वर्कबुक बोलना है. ये जो एक्सेल फाइल है पूरा, इसको हम बोलेंगे वर्कबुक. तो इस वर्कबुक के अंदर मुझे ढूंढना है कि न्यूयॉर्क कहाँ पर है. तो आई विल कॉपी दिस न्यूयॉर्क, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल एफ टू फाइंड, कंट्रोल एफ, और यहाँ पे हम डालते न्यूयॉर्क. ओके. यहाँ पर आप देखोगे कि विद इन शीट, तो विद इन शीट की क्या क्या करेगा, इट विल फाइंड ओनली इन दिस शीट, शॉर्टकट नाम का जो शीट है उसके अंदर ही ढूंढेगा. बट आई वांट टू फाइंड आउट इन एंटायर वर्कबुक, so here we will find out workbook within workbook, and then we will find next, or we can find all. So find all. So Newark, how many places Newark is there? In practice file currency sheet it is there. In name Newark is there. See, in name here you can see Newark. Find next, so it will show Newark here, New York in this sheet. We can find out them. Control F. Then Control H to replace. For example, you want to replace this New York with something. Control H, so New York, and you want to uh, change it, change it to Delhi, Delhi, and replace all to replacement. Okay, so you can see in names, now instead of New York, it is Delhi. Okay, Control Z, Control Z. Let's see, name New York is there. But now what is my task? My task is I want to replace cells with black fill and white font. Means this cell, यहाँ पे black fill है और white font है. So I want to replace this with red fill and yellow font. How to do this? So watch carefully. Control H. You should not have anything here. You should not have anything here. So find what and replace what should be clean. Then what we will do, we will go this format. In drop down of this format, we will select choose format from cell. Okay, we want to select the format from the cell. So I will select this. Now you will see one eyedropper. So I will move this eyedropper over this any cell which is having black fill and white font. I will click here. Okay, I think I selected wrong. Uh, choose format from cell. So I will select this. Where? Okay.
No, because I have made the cursor bigger. That's why I am finding little bit difficult. Yes. Okay. Now preview, I have selected this black and white. So you can see this preview. Now what I want to format it. So go here in field, we will select red. Okay, red field. Font, we will select yellow. Okay. See, now our original format is like this and new format replace with is this. So I will replace all. And see the magic. We have replaced the format. So earlier you would know that Control S is replacing the text, but we can replace the formats also. Okay, that is the beauty of Excel. Now another shortcut is Control N. Now suppose you want to create new worksheet, new workbook, blank workbook. So shortcut is Control N. So we have opened this new fresh workbook. If I want to close this window, this workbook, so shortcut is Control W. Close the window. Control W. It has closed. So W will close selected window. So in Excel application, if you have 3-4 workbooks, so it will close that workbook only. If you have PowerPoints and if you have 4-5 PowerPoints, so it will close existing which is visible PowerPoint, it will close that. But close application, it will close this application also. Right now we can't go close because we are going to conducting this training. So it will close entire Excel application. You can check what is the difference. Then to open existing workbook, shortcut is Control O. Control O. We can see whatever available files are there. We can open it. And one more thing, here you will see the stars. What are the stars? In older computers, you will see pin there. Like WhatsApp, we can pin some of the WhatsApp groups, WhatsApp contacts. Similarly, we can star or we can pin some of the files so that we can use anytime. Okay, you don't need to find out because if you are opening 100 files every day, तो जो सुबह जो पहला फाइल ओपन किया था वो कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा यहाँ पे 100 नंबर पर. तो मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा बार बार. बट ऐसा कोई फाइल होता है कि मुझे बार बार यूज करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू यूज दिस माई कैलेंडर. So I have started. So every time it will be in this favorites. So these are my favorites. So if you click, I will click this. See, this is my calendar of August. So tomorrow I am in Kohinoor Wakad. Then I am in Sravet. Then Corporate Excellence for 4 days. Then Bajaj Auto 17 and 80. Then Dana Anand 2021 and Kohinoor 29. That's all. Control W. Close the page. Then Control O. If you want to star some folders, so you can star some folders. See, if I want calendar folder every time, if I want this GST folder all the time, so I will select this GST and I will make a star. So it will come into favorite. So it will save your finding time, browsing time, searching time. Okay, I hope you understood this. Put put yes in chat box if you understood everything. Yes, Rahul understood. Yes, Rida understood. Anjali understood. Yes, Shubha ma'am understood. Yes, Shantanu Shinde. Okay, great. Now we will go to formula. So let us move to this relative sheet. So now there is two methods of referencing. What is that method? So first method is relative reference. So what is relative reference? Relative reference means I will put this formula here. I want to calculate commission. So how to calculate commission? The sales into commission percent is equal to my commission. Okay, here I want to calculate GST. What is my GST? This invoice amount into GST percent is my calculated GST. Interest. What is my interest? Principal amount into interest percentage is equal to interest.
So now here I will put formula equal left arrow into left arrow and enter. Okay. Now what is my formula? How to see? Control twiddle. My formula is A4 into B4. Okay. Now what I will do? I will select this and I will select all this cell. You know the shortcut to fill it down. To fill this formula down, shortcut is Control D. So I got the answer. I will copy this Control C, right arrow, Control V, right arrow, Control V. So I have created only one formula, but I am getting answers everywhere. Why? Because we are using relative references. So what do you mean by relative reference? So we will see formula Control twiddle. Relative reference means when you drag the formula below, उसके जो रेफरेंसेस है वो भी नीचे नीचे आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेफरेंसेस क्या थे? A4 into B4. When I go below, we see references A5. A4 become A5, B4 become B5. When I go down, A5 become A6, B5 become B6, A7, B7. When I copied this formula towards right, so A4 became E4 now. See, it has moved and its references also moved. When I move this formula from E4, from this GST to interest, reference has changed. E4 becomes I4 and F4 becomes J4. So this is called relative reference. Same like our family. When mummy papa goes to outstation, what will happen? उनके children भी उनके साथ चले जाएंगे. जैसे दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसेस. तो ये फॉर्मूला जहां पर जाएगा, ये उनके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे भी उनके साथ साथ चले जाएंगे, उनके वो मूव हो जाएगा, रेफरेंस उसका चेंज होता जाएगा. कंट्रोल ट्विडर. तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस. आई होप you understood this. Then second thing, absolute. Absolute. So here what is the case? These are few salesperson और उनका आईडीज है. ये सेल्स पर्सन के आईडीज है और उनका ये सेल है कि जनवरी में उन्होंने कितना सेल किया, फरवरी में कितना सेल किया, मार्च में कितना किया, अप्रैल में कितना किया. ओके. अभी यहाँ पे उसका टोटल है कि ये दिस पर्सन का ये टोटल है, ये टोटल, ये टोटल है, सबका टोटल है हर एक पर्सन का 4 महीने का. और उन्हें उनको हमें क्या देना है? यहाँ पे कमीशन देना है. हाउ मच कमीशन वी हैव टू गिव? वी हैव टू गिव 8%. ओके. अगर किसी को मालूम है, इफ यू नो हाउ टू डू दिस, please forget that you know this, unlearn whatever you have learned and you have to relearn again. Then only it will be beneficial for next two sheets. So unlearn जो आपको मालूम है वो भूल जाओ and sit blank. Okay, nothing in your mind. So what you have to do? Now I have to calculate this total sale into this commission percent. So what I will do? I will put formula equal left arrow into left arrow, up arrow, up arrow, up arrow. So I have selected G6 into G3. Enter. Now I will select this shift down arrow, down arrow, down arrow. What is the shortcut to fill down? Control D. Okay. Now there is some problem. Daya, कुछ तो गड़बड़ है. So what is गड़बड़? So you know the formula shortcut to see the references. So I have selected this. What is the shortcut to see the tracing lines of precedents? Alt MP. Alt MP. So how I am getting this commission? It is calculating this 562 and this 8%. ये दोनों का multiplication है. Here Alt MP. So it is calculating this number into this cell. So how much value is there in this cell? In this cell value is no, null, means 0. So 0 multiplied by any number, you will get answer 0. Now third one, Alt MP. What happens? It is calculating, multiplying this 901 into total. You know that numbers and text can be multiplied. तो उनका झगड़ा हो गया numbers और text का, and see the output of the झगड़ा. It is value error. Okay. So what happened when I drag this down? Because of relative reference,
ये जो सेल है, ये रेफरेंस उसका नीचे 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 चला गया। सिमिलरली 8% का जो रेफरेंस था वो भी नीचे 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 आ रहा है। सो व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट? माय रिक्वायरमेंट इज कि ये जो सेल है, टोटल सेल, तो ये नीचे नीचे आना चाहिए। तो इसको क्या होना चाहिए? इसको रिलेटिव रेफरेंस होना चाहिए। बट ये जो 8% है वो नीचे 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 नहीं आना चाहिए। तो ये इसको फिक्स करना है मुझे। सो वी विल स्टॉप दिस, वी विल डिलीट दिस। नाउ सिलेक्ट इक्वल लेफ्ट एरो इनटू लेफ्ट एरो अप एरो अप एरो। अभी मुझे इसको फिक्स करना है। आई डोंट वांट दिस टू बी रिलेटिव। तो उसके लिए शॉर्टकट है फंक्शन की। फंक्शन की आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में, F1 F2 F3 F4, सो दैट इज योर फंक्शन की। तो आपको क्या करना है? F4 प्रेस करना है। कभी कभी आपको F4 करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको फंक्शन की है, देखो Fn लिखा है कंट्रोल के राइट साइड में, तो दैट फंक्शन की एंड F4 प्रेस करना है। तो अब मैं यहाँ पे F4 प्रेस करता हूँ। सी व्हाट इज द चेंज? देयर इज अ चेंज। यहाँ पे डॉलर आ गए, देखो कि डॉलर जी के पहले एक डॉलर है, 3 के पहले एक डॉलर है। सो व्हाट डज दैट मीन? जी के पहले एक डॉलर है, दैट मीन्स जी इज लॉक। माय कमीशन परसेंट इज इन कॉलम जी। तो ये जी कॉलम लॉक किया। देन 3 के पहले डॉलर, इसका मतलब 3 इज लॉक्ड। व्हाट इज 3? माय रो नंबर इज 3। सो रो नंबर 3 इज लॉक्ड। एंटर। नाउ आई विल सिलेक्ट दिस, शिफ्ट डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो। तो शिफ्ट दबाकर डाउन एरो करेंगे तो हम एट टाइम एक सेल सिलेक्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज द शॉर्टकट टू फील डाउन? फील डाउन करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल डी। नाउ वी गॉट द आंसर। आई वांट टू क्रॉस चेक। तो अभी आपको मालूम है हाउ टू फाइंड आउट डिपेंडेंट्स। तो आई विल सिलेक्ट दिस 8%। आई वांट टू सी 8% के ये सारे डिपेंडेंट है क्या। शॉर्टकट इज अल्ट एम डी। देखो सभी जगह पे 8% 8% 8% उसने यूज किया है। वी विल क्रॉस चेक वंस अगेन। हाउ? कंट्रोल ट्विडल, कंट्रोल ट्विडल। नाउ यू विल सी G6 इज माय रिलेटिव रेफरेंस। तो G6 का हो गया G7, G8, G9, बिकॉज वी ड्रैग दिस फॉर्मूला डाउन, तो उसके रेफरेंसेस भी नीचे नीचे ड्रैग हो गए। बट G3, G3 देखो यहाँ पर G3 लॉक किया हमने, G3 G3 G3, सो इट हैज नॉट मूव्ड because it is no more relative reference now. It is now constant. It is fixed reference and we call it absolute reference. Okay. Control twiddle. We will go back. कितने लोगों को कंसेप्ट समझा है? जिसको नहीं समझा है दे कैन पुट नो। तो अगर नहीं समझा है तो वी विल रिपीट इट वंस अगेन। जिनको समझा है यस कर दो, जिनको नहीं समझा है नो कर दो। पुट इन द चैट बॉक्स। यस, राहुल अंडरस्टूड। यस, जयदीप। यस, शंतनु प्रतीक। यस, यस, दैविक राय। यस। ओके। Rida, yes. Very nice. Okay, very good. So we are on right track. Now let us see mixed references. Mixed reference. Now little difficult one. Okay. Now this is the crux of the formula. This is very important thing you should know in the formula. Okay. If you know this, you will not fear any formula future, and it will save your formula writing time 50%। 50% कम टाइम लगेगा आपको जब कभी भी आपको फॉर्मूला बनाना है तो। ओके। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज आई वांट टू राइट डाउन, फाइंड आउट द कमीशन here in these sales based on sales of quarter 1, 2, 3 and 4. So these are my quarter sales, quarter 1, 2, 3, 4, and this is my commission percent north, south, east and west। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे? कमीशन क्वार्टर वन का, तो यहाँ पे क्वार्टर वन का सेल इंटू 12%। हियर क्वार्टर वन का सेल इंटू साउथ का परसेंटेज कमीशन परसेंट। हियर क्वार्टर टू का सेल इंटू दिस 15%। बट आई हैव टू क्रिएट सिंगल फॉर्मूला विच विल गिव रिजल्ट everywhere. Okay, so let us try now.
purposely I will make some mistakes so that you will understand properly. Okay. So equal up arrow, up arrow, up arrow. Now I understood that I should lock it. Okay. I will press F4 into left arrow. I have selected this. Enter. Now I select this, shift down, shift right arrow, right arrow, right arrow. What is the shortcut to fill down? Control D. What is the shortcut to fill right? Control R. Now you see, I locked this. That is why these results are okay. But these results are not good, not okay. गलत हो गया. So we are wrong. Once again we will try equal up arrow, up arrow. Now I will not lock this into left arrow. I will lock this time. Enter. Select Control D, Control R. Now this is okay. This row is okay. 9 number row is okay. But these columns are not okay. Not right. So there is some problem. Okay. This will also not help. Now listen carefully. Watch carefully. Equal up arrow, up arrow, up arrow. Now think like me. Okay. Think like me. I will give you the theme to think. Where are my all sales? Q1 का सेल, Q2 का सेल, Q3 का सेल, Q4 का सेल कहाँ पर है? D6 में है, E6 में है, F6 में है और J6 में है. ओके. तो कहाँ पर है हमारा? D6, E6, F6 और G6. तो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर इन ऑल? इस सब में कॉमन क्या है? तो यू विल सी 6 इज द कॉमन फैक्टर. ओके. सिमिलरली, व्हाट इज माय कमीशन परसेंट? C9, C9, देन C10, C11, C12. तो इसके अंदर कॉमन क्या है? C9, C10, C11, C12 में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन? सो C इज कॉमन. इन दिस सेल्स में क्या है? 6 इज कॉमन एंड हियर C इज कॉमन. ओके. नाउ रिमेंबर दिस. Equal up arrow, up arrow. Now we saw that my data flows in this row D6, E6, F6 and G6. So 6 is the constant. 6 is the common thing. So I need to lock only 6. So what I will do? I will press F4. So first time when I press F4, it will lock both. Now once again I will click F4. Now it will lock 6. जिसके लेफ्ट साइड में डॉलर है that is locked. देखो अभी 6 मेरा कांस्टेंट है तो I will lock only 6 into लेफ्ट एरो. लेफ्ट एरो में आपने देखा कि C9, C10, C11, C12. So what is constant? C is the constant factor. So I will press F4. First time it will lock both. F4. Second time it will lock row number. F4. Third time it will lock column. So now left side to C is the dollar. That is why C is locked. और अगर चौथी बार आप F4 करते हैं तो डॉलर निकल जाएगा. ओके. तो F4 वो दोनों के लिए, सेकंड F4 रो के लिए, थर्ड F4 कॉलम के लिए. एंटर. आई विल सिलेक्ट दिस. शिफ्ट डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, shift right arrow, right arrow, right arrow. To fill down, Control D. To fill right, Control R. Okay. Now result seems to be right. Still I want to cross check. I will select this. Alt EMP. See, it is taking this sale and this commission percent. Here Alt EMP. It is taking this Q2 sale and this East commission. Select this. Alt EMP. Q3 sale. South commission. Alt EMP. See, Q4 sale and West sale. Perfect. So if you understood this, you don't need to fear. Okay, you will overcome this fear. Let me know if you understood this. Yes, Rahul understood this. Shantun understood.
Jaydeep, Anjali, Rida. Yes. So, sir, can you please repeat? Okay. Okay. Yes. So what we'll do? We'll delete this. Okay. Now I have to calculate this sales into this commission percent. Okay. So equals up arrow, up arrow. Now where are my all sales? Quarter one, two, three, four. All sales are in row number 6. So I should lock 6. In other words, my data flows in D6, E6, F6 and G6. So 6 is my constant factor. So I should lock 6. So F4, F4. So now it has locked 6. Okay. Into left arrow. Now my data flows in C column. C9, C10, C11, C12. So C is constant factor. So I will lock C9, F4, F4, F4. Enter. Now I will select this. Control D, Control R. Now I will check all the formulas. Control Twiddle. Now you will see here D6. I lock this 6. So here also D6, 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 D6. It is not changed. So we are taking same reference for all this. Here E6, 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 E6. So we are taking same reference here. Similarly, in this row C9, we are taking this reference. Here also C9, here also C9, here also C9. We are not changing this reference. Okay. Here C10, 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 C10 is constant. Changes is E6 to E6. Here E6 is constant, but C9 becomes C10. Here D6 becomes E6. Okay. So this is the theme. Control Twiddle. Okay. If you still not understood, watch the video 2 times. Practice it. Then you will come to know. Okay. Great. Now names. Yes. Okay. Understood. Very nice. Okay. Now names. In Excel, Bill Gates says everything should have name. For example, if I select this column has got name E. If I select this row, the row has got number 3. So if I select this cell has name D3. ओके. हमने टेबल क्रिएट किया था. टेबल के लिए भी कुछ नाम था. ऐसे हम किसी को नाम दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ये जो डॉलर टू इंडियन रुपीस का जो कन्वर्जन रेट है, इसको मुझे नाम देना है. ओके. तो इसको नाम कहाँ देना है? यहाँ पे देखो नेम बॉक्स में आपको दिखता है C2, या फिर उसको शॉर्टकट है Alt F3. क्या शॉर्टकट है? Alt plus F3. ओके. सो सिलेक्ट दिस, देन प्रेस Alt F3 या मैन्युअली गो देयर, और उसको हम नाम देंगे रुपीस. RUPEES and enter. Don't forget to enter. People give the name but forget to enter. और दूसरा चीज, whenever you are giving some name, don't use space there. Okay, it should be continuous. So if you go here and down arrow, you will see rupees. Okay, rupees here. So I have given this name as a rupees. Okay. Now another thing, this 4 cells, I want to give name like quarter one. These 4 cells, I want to give name as quarter two. But these are 4 columns. Sometimes there may be 50 columns. So I should not waste time going to each column and give some name. So what I will do, I will select this quarter one, control shift down arrow, control shift right arrow, but I don't want this total. So shift left arrow. So now I have selected these 4 columns. Now there is one shortcut to give some name. Shortcut is Alt M P. Shortcut is, sorry, shortcut is Alt M C. Okay, Alt M C. So what will happen? It is showing कि इसको मैं क्या नाम दूं. टॉप रो में जो लिखा है वो नाम दूं, या लेफ्ट कॉलम में जो लिखा है वो नाम दूं, या बॉटम रो का नाम दूं, या राइट कॉलम का नाम दूं. तो हमें टॉप रो में जो लिखा है वो नाम चाहिए. सो बाय डिफॉल्ट इट इज टॉप रो.
we'll select it. Okay. Okay. Now let us see in this name box. You will see quarter one, quarter two, quarter three, quarter four. यहाँ पे देखो क्वार्टर वन में स्पेस था, तो स्पेस इज नॉट अलाउड. बाय डिफॉल्ट इट हैज टेकन क्वार्टर अंडरस्कोर वन, क्वार्टर अंडरस्कोर टू. ओके. नाउ आई वांट टू गिव सम नेम टू दिस सेल्स. उसको नाम क्या देना है मुझे? न्यूयॉर्क. इसको देना है जॉर्जिया. इसको देना है उता. तो आई विल सिलेक्ट दिस, देन शिफ्ट, सिलेक्ट दिस, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट एरो. तो अभी यहाँ पे देखो ये सारे हमने सिलेक्ट किया उसके नाम के साथ. तो शॉर्टकट है हमारा अल्ट एम सी. नाउ दिस टाइम इट इज आस्किंग उसको क्या नाम दूं. तो लेफ्ट कॉलम में जो लिखा है वो नाम दे दो. यस सिलेक्टेड, राइट. से ओके. ओके. तो दूसरा शॉर्टकट क्या था? अल्ट, अल्ट प्लस एम सी. ओके. अब यहाँ पे जाके देखते हैं. कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, न्यूयॉर्क एंड उता यहाँ पे आ गया. अभी हम जाएंगे नेक्स्ट सीट के अंदर. यहाँ पे मुझे बॉस ने बोला है कि नंद कुमार मुझे क्या करो, एक क्वार्टर वन और क्वार्टर थ्री का सम करके दे दो. ओके. तो हम यहाँ पे सम करेंगे. इक्वल सम टैब. तो नंबर मुझे क्या चाहिए? क्वार्टर वन का सम चाहिए. तो व्हाट आई विल डू, आई विल टाइप क्यू. और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, एज सुन एज आई टाइप क्यू आई कैन सी दिस क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री. तो क्वार्टर वन आ गया, टैप किया, कॉमा. नाउ आई वांट क्वार्टर थ्री आल्सो, सो क्यू. तो डाउन एरो आई विल सिलेक्ट दिस क्वार्टर थ्री. टैप करो. टैप करेंगे तो क्या होगा? नीचे जो है ऊपर आएगा टैप. आपको मालूम है एंटर करने, ब्रैकेट क्लोज करने का जरूरत नहीं है. एक्सेल अपने आप कर लेगा एंटर. देखो आ गया. दोनों का सम आ गया, क्वार्टर वन और क्वार्टर थ्री का 84. ओके. अभी यहाँ पे बॉस ने पूछा कि न्यूयॉर्क और उता के सेल के अंदर कितना फर्क है मुझे बताओ. तो हम देखते हैं. इक्वल्स सम. किसका सम चाहिए? न्यूयॉर्क का. तो एन ई. देखो यहाँ पे नीचे न्यूयॉर्क दिख रहा है. टैप, ब्रैकेट क्लोज, माइनस सम ऑफ उता, यू टी. देखो आपको यहाँ पे उता दिख रहा है. टैप, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. देखो दोनों का सम में डिफरेंस कितना है? 16 का फर्क है. ओके. बट बॉस ने क्या बोला मुझे? अरे ये तो डॉलर में आ गया, मुझे रुपीज में कन्वर्ट करके दे दो. तो चलेगा, रुपीज में करेंगे. तो यहाँ पे फिर से करते हैं. इक्वल सम क्यू क्वार्टर वन, कॉमा क्यू क्वार्टर थ्री, ब्रैकेट क्लोज, इनटू क्या होना चाहिए? रुपीज. आर यू. देखो आ गया रुपीज, रुपीज, एंटर. देखो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला है. तो हमने क्वार्टर वन और क्वार्टर थ्री का सम किया और उसको रुपीज से मल्टीप्लाई किया है. देखते हैं अभी ये 84 सही है क्या. नेम में जाते हैं. देखो क्वार्टर वन, क्वार्टर थ्री का सिलेक्ट किया और यहाँ पे उसका टोटल आएगा 84. ओके. देखो यहाँ पे दिख रहा है सम 84. ओके. और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 95.37 से. तो यहाँ पे हमें आंसर आ रहा है 8011. सो नेम इसलिए यूज किया जाता है कि हमको उसको फ्यूचर में कहीं भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 50 सीट है, लेकिन ये जो कांस्टेंट फैक्टर हमने लिखे हैं यहाँ पे, ये किसी एक सीट के अंदर है, तो हम सारे 50 सीट के अंदर उसको रेफरेंस ले सकते हैं. और फॉर्मूला भी देखो कितना यूजफुल है. कि हमने क्या किया है? क्वार्टर वन का सम है, क्वार्टर थ्री का है, रुपीज है. अगर ये नहीं होता तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता था? हमारा फॉर्मूला बनता था सम ऑफ ए ए थ्री, ए फाइव टू ए एट, देन सम ऑफ डी फाइव टू डी एट इंटू सी टू. ये फॉर्मूला समझने के लिए कितना टाइम लगता था हमको? हमको उस सेल के अंदर जाके देखना पड़ेगा. बट हियर वी नो दैट इट इज मल्टीप्लाइंग बाय कन्वर्जन ऑफ रुपीज, इंडियन डॉलर, डॉलर टू रुपीज. और ये यहाँ पे क्वार्टर वन और क्वार्टर थ्री का सम है. ओके. चलो थैंक यू वेरी मच.
कल क्लास नहीं होगा, कल क्लास के लिए छुट्टी लेंगे हम। तो आपको प्रैक्टिस करना है, आपका वीडियो देखना है बार बार, लोगों को शेयर करना है, लाइक और कमेंट करना है। कमेंट अभी भी लोग नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो कितना कॉस्ट जाता है आपका कमेंट करने के लिए। तो सबसे ज्यादा कमेंट होना चाहिए, लाइक होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय। बाय सर।